everyone, I am Bhumika Indori, Product Coordinator, LegalEdge After College. In today's video, we are going to discuss constitutional law judgments and few multiple choice questions which are very important for your upcoming CLAT and AILET PG examination 2023. So let's begin with first judgment of the day. The name of the judgment here is State of Odisha versus Utkal Distilleries Limited. This case was decided by Justice L. Nageshwara Rao and Justice B.R. Gavai. All right. Now, here the contention in this judgment was related with levy of excise duty. All right. Now, levy of excise duty on alcohol. In this particular case, it has been held that the alcohol is divided into two categories. One is alcohol made for human consumption and other one is alcohol made for other than human consumption. In case the alcohol which is for human consumption, here the state has the authority, the state has the power to levy excise duty, and all the alcohol which is other than human consumption, here the center has the authority to levy excise duty. All right. In this particular case, another case was referred by Supreme Court. The name of the case is Synthetics and Chemicals Limited and others versus State of UP. This is 1990 judgment. All right. Now, one more thing which is important in this particular case is that Entry 51 List 2, it authorizes state legislature to levy tax, whereas alcohol liquor other than human consumption has been left to central legislature, entry number 84, for levy of duty of excise. Now understand here, यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया कि जो भी एंट्री नंबर 51 लिस्ट 2 में मेंशन है वो सारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिकर हैं एंड उस लिकर पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी है टू लेवी टैक्स एंड जो भी लिकर उसके बाहर है वो डायरेक्टली फॉल हो जाएगा एंट्री नंबर 84 में एंड वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होगी टू लेवी द टैक्स. ऑलराइट, नाउ next case of the day is Messrs. Puri Investments versus Messrs. Young Friends and Company and others, decided by a division bench of Justice Bineet Sarani and Justice Anuradha Bose. All right. Now here in this judgment, Supreme Court held that High Court, while exercising powers of supervisory court, all right, where these powers are given, Article 227 of Constitution of India deals with High Court's supervisory jurisdiction. So in this particular case, Supreme Court held that High Court जब अपने supervisory jurisdiction के powers को exercise करेगा, जो powers उसे Article 227 में दिए हुए हैं, ठीक है, cannot act, the High Court cannot act as an appellate body. High Court यहाँ पे as appellate body act नहीं कर सकता and वो evidence को re-appreciate नहीं कर सकता. I repeat, in this particular case, Supreme Court held that High Court जब अपने supervisory jurisdiction को, supervisory court के powers को जब यूज करेगा उस वक्त पे वो एज appellate body नहीं एक्ट कर सकता एंड एविडेंसेस को रीअप्रिशिएट नहीं कर सकता. ऑल राइट, नाउ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 227 कैन इंटरफेयर किससे वो इंटरफेयर कर सकता है विद द डिसीजन ऑफ फैक्ट फाइंडिंग फोरम ओनली व्हेन इट्स फाइंडिंग्स आर perverse, that is, first, erroneous on account of non-consideration of material evidence or being conclusions which are contrary to the evidence or based on interference
that are impermissible in law. Now ये तीन grounds दे रखे हैं जहां पे हाई कोर्ट while exercising its supervisory court powers या supervisory jurisdiction can interfere. Other than this वो interfere नहीं कर सकता. All right. Now High Court tested the legality of the order of tribunal. In this particular court, High Court ने क्या किया था? Tribunal के order की legality को test किया था from the lens through the lens of an appellate body. ठीक है, appellate body की lens से मतलब वहां यहाँ पे in this particular case, High Court was trying to act as a appellate body, ठीक है, which is not permissible, which is not permissible या which is impermissible. All right, I hope ये case भी आपको समझ आया होगा. Now let's move forward and see third case of the day. The name of the case here is Bhola Kumar versus State of Chhattisgarh. All right, decided by division bench of Justice Ajay Rastogi and Justice Abhay S. Oka. Now, in this particular case, the court held that detention, कोई भी detention beyond actual release date amounts to violation of not only Article 19(1)(d) but also Article 21 of Constitution of India. All right. Now यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी डिटेंशन या वो एक्चुअल रिलीज डेट के अगर बियॉन्ड होता है तो वो 19(1)(d) एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन होगा. एंड in this case, the petitioner had approached the Supreme Court saying that despite undergoing the full sentence of 7 years rigorous imprisonment, he has not been released from the jail. All right. In fact, the record revealed that he had undergone 10 years, 3 months, and 16 days in custody. After the Supreme Court issued the notice, the petitioner was released from the jail. तो ये जो सेंटेंस खत्म होने के, ठीक है, ड्यूरेशन के बाद जो क्रिमिनल्स जो अलेज्ड अक्यूज्ड जो होते हैं, प्रिजनर्स जो होते हैं, जो वो जेल में रह जाते हैं उस पीरियड के बियॉन्ड, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है then state has to answer कि ऐसा क्यों हो रहा है. All right, so state has also been asked to collect the data from all over the state regarding such similar incidents. तो यहाँ पे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को ये बोला गया कि आप डेटा कलेक्ट करें हर एक प्रिजन में से और बताएं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका सेंटेंस का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है लेकिन तब भी वो अभी बिहाइंड द बार्स हैं. ऑलराइट, सो in this particular case, you have to remember that court held that detention beyond the actual release date amounts to violation of not only Article 19(1)(d) but also Article 21 of Constitution of India. All right. Now, next case here is, which is very important, case of 2022, year 2022. I have taken all the cases here in this lecture from the year 2022 itself, but this particular case is very important. With the name of the case is X versus the Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, decided by three-judge bench of Justice D.Y. Chandrachud, Suryakant, and Justice A.S. Bopanna. Now here it was held that there is no basis to deny unmarried women the right to medically terminate the pregnancy when the same choice is available to other category of women. Now यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते वक्त जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था मैरिड women एंड अनमैरिड women के केस में इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी उसको खत्म कर दिया गया और कहा that Medical Termination of Pregnancy Act in 2021 substituted the word husband in explanation 1 to section 3(2) of the act with the word partner. इसी के लिए जो word husband है उसको substitute करके
पार्टनर कर दिया गया ताकि जो भी लिविंग रिलेशनशिप है वो इसके अंदर आ पाए। ऑलराइट, इस केस में और बहुत सारी फाइंडिंग्स थी। Few of them I already have discussed in other video which I've taken 4-5 days back, तो आप उसको भी देख सकते हो। Now let's move forward and see next case which says State of Manipur. State of Manipur versus Surja Kumar Okram, decided by Justice L. Nageshwara Rao, B. V.R. Gabai, and B.V. Nagaratna. Now here जो बेंच है उसने कुछ प्रिंसिपल नोट डाउन किए। दे आर अ स्टैट्यूट विच इज मेड बाय अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर इज वैलिड। ठीक है, जो भी एक स्टैट्यूट अगर किसी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने बनाया है तो वो वैलिड होगा तब तक जब तक कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हो जाता कोर्ट ऑफ लॉ से। ऑल राइट, सेकेंड हियर इज आफ्टर declaration of a statute and constitutional by court of law, it is non-est for all purposes। ठीक है, अगर वो एक बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो वो अभी किसी पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। Third is in declaration of law, the doctrine of prospective overruling can be applied by this court to save past transaction under earlier decision superseded or statute held unconstitutional. Fourth is relief can be molded by this court in exercise of its power under Article 142 of the Constitution by using the powers given under 142, under Article 142, relief को mold किया जा सकता है, notwithstanding the declaration of the statute is as unconstitutional. All right, so this was held, these principles were held in case of state of Manipur versus Surja Okram. Now next case here is Kishore Madhukar Pinglekar versus Automotive Research Association of India, decided by Justice Sanjeev Khanna and Bela M. Trivedi. Now, this particular judgment is very, very important. Why? Because here, Automotive Research Association of India held not to be a state. That means that it is not covered under the definition of state provided under Article 12 of Constitution of India. Now here Supreme Court observed that the presence of some element of public duty or function would not by itself suffice for bringing a body within a net of Article 12। तो अगर आर्टिकल 12 के अंदर किसी चीज को आनी है जिसके बाद वो स्टेट कहलाएगी, सिर्फ उससे, ठीक है, सिर्फ क्योंकि वो उसमें कोई पब्लिक ड्यूटी का प्रेजेंस है, ठीक है, या कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि वो कर रहा है, सिर्फ फंक्शन या पब्लिक ड्यूटी से वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। एंड ओवरऑल एंड होलिस्टिक व्यू ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द प्राइमरी फंक्शंस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो आल्सो सुप्रीम कोर्ट मेंशन कि यहाँ पे in order to bring something under the purview of Article 12 of Constitution of India, it is required that an overall and holistic view and functions and activities, including the primary functions, should be taken into consideration, and held that Automotive Research Association of India is not state. In this particular case, Supreme Court referred the case of Pradeep Kumar Vishwas versus Indian Institute of Chemical Biology 2002. It is to be observed that determination of body as a state is not a rigid set of principles, which is to be seen is whether in light of cumulative fact as established, the body is financially, functionally, and administratively dominated by or under the control of government, albeit if the control is mere regulatory, whether under the statute or otherwise, it will not serve to make a body state. Also, the presence of some element of public policy or functions would not by itself suffice for bringing a body within the Article 12. All right.
All right, so next case is Abdul Baha versus State of Madhya Pradesh, decided by Justice K.M. Joseph and Justice Rishikesh Roy. In this particular judgment, court said that by reason of an order of confiscation, all right, by the reason of an order of confiscation, a person is deprived of the enjoyment of his property. Now understand, इस केस में हुआ ये था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया था, all right, and उसके बाद ट्रायल कोर्ट उस पर्टिकुलर पर्सन का एक्विटल कर देता है, लेकिन उसकी जो कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है वो रिलीज नहीं होती है. देयर कोर्ट सेट आर्टिकल 300A, ऑलराइट, 300A जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट लेटर बाय द वर्च्यू ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ठीक है, इसको एक constitutional legal right बना दिया गया of the constitution. It provides that no person shall be deprived of his property save by the authority of law. All right, therefore, to deprive any person of their property, it is necessary for the state inter alia to establish that the property was illegally obtained or is part of proceeds of the crime or the deprivation is warranted for public purpose or public interest. Now the district magistrate's order, यहाँ पे जो district magistrate का order जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, of confiscation ignoring the trial court judgment of acquittal is not only arbitrary. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो ये ऑर्डर है ये सिर्फ आर्बिट्री नहीं है, इसके साथ साथ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स. ऑलराइट, सो नाउ वी विल सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हियर. फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट इन January 2022 held that before providing for reservation in promotions to a cadre, the state is obligated to collect quantifiable data regarding inadequacy of representation of Supreme Court and scheduled caste and scheduled tribes. So ये particular point, ठीक है, कि आपको एक स्टेट में क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट करता हो कि वहां पे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का कितना रिप्रेजेंटेशन है बिफोर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन इन प्रमोशंस. ऑलराइट, ये हेल्ड हुआ था इन द केस ऑफ जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता. नाउ ये पर्टिकुलर केस 2018 में भी इसका डिसीजन आया था एंड 2022 में भी आया था, एंड दिस पर्टिकुलर केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे question says, who among the following former judges has been appointed by the Supreme Court to head the committee to inquire into the security lapse which happened during the visit of Prime Minister Narendra Modi to Punjab on January 5, 2022. So जब प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी जब पंजाब गए थे तो वहां पे जो उनकी सिक्योरिटी थी उसमें जो लैप्स आया था उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, वो किस जज ने हेड की थी? तो इट वाज हेडेड बाय जस्टिस इंदु मल्होत्रा. नाउ यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो पूरा फैक्ट है ये कवर हुआ है. केस का नाम है लॉयर्स वॉइस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है. Now this case is important in this respect. You should read it once. Now next case here is in which of the following cases Justice Jagdish Singh Kehar took a minority view during his period of Chief Justice of India. तो जब Justice Kehar was CJI, ठीक है, उस वक्त पे कौन से जजमेंट में उन्होंने minority व्यू लिया था? तो आई थिंक इसके बारे में सबको पता होगा as it is important judgment, and यहाँ पे the answer is the ट्रिपल तलाक केस. ऑलराइट, ट्रिपल तलाक केस जिसका नाम क्या है? शयारा बानो वर्सेस Union of India. This case was decided by 3:2 majority, और यहाँ पे majority में थे जस्टिस कुरियन, जस्टिस यूयू ललित एंड जस्टिस नारिमन, एंड मिनॉरिटी में थे जस्टिस कहर और उनके साथ जस्टिस अब्दुल
नाजिर। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं विच सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज recently upheld the validity of 103rd constitutional amendment which introduced 10% reservation quota for economically weaker section in education and public employment। तो कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहेल्ड करके ये कहा था कि जो 10% कोटा 10% रिजर्वेशन ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट देती है ईडब्ल्यूएस के लोगों को वो सही है। सो here the answer is Janhit Abhiyan versus Union of India। Now you all know about this thing, but probably there's a possibility कि यहाँ पे आपको केस का नाम ना याद रहे, तो आप यहाँ पे केस का नाम याद कर सकते हैं कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नाउ last question of the day is which of the following amendment of the constitution deal with the reservation for EWS in education and public employment। तो ये तो कोई गलत करेगा ही नहीं because like right now in question number 4 we have read that is 103rd amendment and case का नाम था जनहित अभियान versus Union of India। and one more thing which is very important here is कि reservation से related जितने भी recent case laws हैं landmark case laws हैं वो आपको पढ़ के जाना है। they all are important for your upcoming CLAT PG 2023 examination and many of you are asking on different social media platforms कि मैम CLAT PG की भी क्या मास्टर क्लास होगी। सो मास्टर क्लास ऑफ CLAT PG is scheduled for 12th 13th and 14th of December। ठीक है, आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पे क्लिक करके आप इस 3 days CLAT PG master class के लिए रजिस्टर कर सकते हो। And if you have any question related with CLAT or AILET PG 2023 examination, you are most welcome to ask. All right. So we are ending this video here only. We'll meet you in next video. Till then, bye bye. Keep studying. Bhumika and Dori signing off.